little learners, today we are going to start with chapter 14, that is life of human being. So in this chapter we will study about tools and weapons, invention of fire, beginning of farming, invention of wheel and invention of metals. So in this chapter, let's start with the chapter now. I will tell you about early human being. So early human beings are human who lived on the earth thousands of years ago. ये फॉरेस्ट में रहते थे जस्ट लाइक एनिमल्स एंड यूज टू रोम अबाउट इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड और एक प्लेस से दूसरी तरफ रोम करते थे खाना ढूंढने के लिए. They were also known as food gatherer. He stayed near the streams of water and used to sleep on tree tops. Tree tops पे रहते थे, dark caves में रहते थे and to hide or protect themselves from the strange animal. He did not have any weapon to kill these animals and to protect himself from them. So, but two things helped a man most. Human had 2 hands, 2 feet instead of our 4 feet, which animals had. His hands were free to do many things. Secondly, he had a brain better than animal and he could plan his activities with skill, right? So the early human ate raw fruits of the tree, grains of the grass, plants and even roots of the plant. They killed animal and ate their flesh. वो animals को मारते और उनका flesh खाते हैं. And tools and weapons, if we talk about, it's difficult to pluck fruits from the high branches of trees. ठीक है, तो जो ऊंची ऊंची branches होती थी उससे फ्रूट्स को लेना मतलब जितना भी प्लक करना वो इजी नहीं था या फिर एनिमल्स को किल करना विद बेयर हैंड्स. सो अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग वुडन स्टिक्स और स्टूल. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अर्ली मैन ने वुडन स्टिक्स का यूज करा और रॉक्स का मतलब पत्थर का स्टोन्स का यूज करा टू किल द एनिमल्स एंड टू प्लग द फ्रूट्स. सो he found some edge and sharp stone which helps in digging out roots and hunt animals. And these stones become tools for getting food. और ये जो stones थे क्या बन गए, टूल बन गए जिससे आप क्या कर सकते हो, फूड ले सकते हो. ग्रेजुअली अर्ली ह्यूमन लर्न टू गिव शेप टू द स्टूल्स. फिर धीरे धीरे क्या करा, अर्ली मैन ने जो आपके स्टोन्स थे उनको शेप करा, उनको ब्रेक करा और उनको शार्पन करा. एंड लेटर ही बिगन टू टाई द पॉइंटेड स्टोन टू अ वुडन स्टिक एंड ही मेड स्पेयर. नाउ ही कुड फाइट एंड किल एनिमल्स. अब वो लड़ भी सकते थे और एनिमल्स को मार भी सकते थे. और जो स्पीयर्स है दे वर ऑल्सो द वेपन्स. एंड लेटर ही स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम बोन्स ऑफ एनिमल्स. और उन्होंने क्या करा, जो बोन्स होते हैं एनिमल्स के उनसे टूल्स बनाना स्टार्ट करा. Invention of fire, which is an important discovery, which breaks stone for making tools. Sparks were produced over here, and dry leaves and grass caught fire with these sparks. And he learned to make a fire. Early men saw fire breaking out, or forest was destroyed, and animals were also destroyed. And he was afraid of fire, और वो डरते थे. And what happened? Invention of fire ने किसमें हेल्प करा, जो उनका केव्स डार्क रहते थे उसमें लाइट प्रोवाइड करी. एंड ही ऑब्जर्व दैट फायर इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ वुड्स एंड लीव्स. किससे प्रोड्यूस होती है, जब हम वुड्स को लीव्स को बर्न करते हैं. स्लोली अर्ली मैन टुक करेज एंड लेट अ फायर इन अ पीस ऑफ वुड हिमसेल्फ. और उसने जंगल में फायर करी. एंड ही एडेड ड्राई लीव्स एंड वुड टू कीप इट बर्निंग. उसने ड्राई लीव्स रखी, वुड रखी, राइट. एंड he also noticed that the food cooked in fire was more tasty and soft. Now he was not much afraid of fire. अब वो ज्यादा नहीं डरते थे फायर से. Slowly he learned to make spear by rubbing 2 dry bamboo sticks. Now he did not have to keep fire burning all the time. अब ये नहीं था कि पूरे टाइम उन्हें बर्न करनी थी. अब जब वो चाहे तब उसको जला सकते हैं और यूज कर सकते हैं. Now beginning of farming, ये one of the biggest achievement था. Because at that time they do not know how to grow crop. Then they started growing crop, and for a very long time they used to eat only fruits and rootstock plant. They would eat fruits and throw away the seeds. वो fruit को खाते थे और seeds throw कर देते. तो what they see after some time कि जो seed उन्होंने फेंक दिए उसमें से plant grew होगा. This is how they invented how to grow the crop. They started collecting seeds and threw them to a clean piece of land. And early human learned farming. This is how the early human being learned farming. They used stone tools make the ground soft. They began to use wooden tools जिससे ground को soften करते थे और ground को flow करते थे. Early human beings kept learning from surroundings. They learned that some animals could be tamed. They use animals. और इन्होंने animals का use करा as food और for getting milk. इन्होंने किस किस को टेम करा, काव को, शीप को, गोट को. एंड दे गिव देम मिल्क और milk with them. So dog proved helpful to early men, early human beings in hunting animal. They used oxen to plow the field. They began to keep these animals as domestic
फिर इन्होंने इनको एज अ डोमेस्टिक एनिमल अपने पास रखा। फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। वन डे व्हाट हैपेंड कि जो अर्ली मैन था, इन्होंने देखा कि जो लॉग ऑफ वुड है वो रोल करता हुआ आ रहा था। तो विद दिस दे गेट एन आइडिया एंड व्हाट ही डू, ही पुट अ राउंड लॉग अंडर हिज स्लेज and the logs rolled under heavy object. Later he thought of fitting the sledge on rolling logs and he cut slice of a tree trunk. Holes were made and two slides were joined by an axle. The axle was fixed to sledge और वो sledge से fix था and he made a wheel cart. उससे wheel cart बनाया to move on even ground easily. Bullocks and horses were used to pull the cart. फिर हमने bullocks और horses का use करा to pull the carts. Carts made movement of people and goods very easily. People of different area exchange goods and knowledge. फिर लोगों ने यहाँ पर goods को knowledge को exchange करा. With the passage of time, what men used? He used wheel for making clay pots. Even today, clay pots were made on the wheel. They dried in the sun and baked to make them strong. The invention of the wheel was very important event in the life of human being. सबसे important event था in the life of human being. Invention of metal. Later on what happened, जो early men थे, they learned to make some stone harder than ordinary stone. He melted the stone in fire. Metals were obtained through the melting of the stone. Iron and copper, both were probably the first metal to be discovered. Early humans started making what? Various things from these metal. Iron is a hard metal. Human made sharp and stronger too. He cut the forest with them. और लैंड पे उन्होंने क्रॉप उगाया एंड आयरन हैज बीन द मोस्ट यूज्ड मेटल सिंस देन। और जब से ही आयरन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेटल बना जिसको हमने यूज करा। Right, children? This was all in this chapter. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.